And okay, from 7th March, your MST will be start, and in that, whatever the topic I covered till now, okay, so include in that the CT and PT also uh, in, will came in your MST examination, okay. So and this last topic, today I will cover the some example related to this year's current transformer, and one more topic is left, which is which I will not put on your MST. Okay, so that topic will be covered by tomorrow. उसमें सिर्फ आपका इंटरफेसिंग ही है. There are number of electronic devices which is used for operating this CTs and PTs, okay, and other equipment. So that will this top those topic is I will not put in your MST, but whatever the topic which we are covered till now, that all topics will be in your MST. Okay, I will set that topics in your MST. सो उसमें आपके कुछ सम एग्जांपल न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आएंगे, और जो ट्रांसड्यूसर के जो न्यूमेरिकल एग्जांपल जिस जिस टाइप के मैंने कवर किए हैं उसी टाइप के देखना. ओके. एंड okay, and one more thing, tomorrow I will take your one class test, small class test, which in that 10 question will comprise, and mm, in that first unit, and transducer. Okay, फर्स्ट यूनिट दैट इज एरर एनालिसिस के सभी टाइप के एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल प्लस दिस CT and PT प्लस योर दिस ट्रांसड्यूसर टाइप्स ऑफ जितने भी उसके एग्जांपल है, न्यूमेरिकल एग्जांपल. सो उस पे एक 10 मार्क का टेस्ट लेंगे. ओके, सो दैट टेस्ट विल बी हेल्पफुल फॉर डिसाइडिंग योर TA. ओके, सो TA में जो मार्किंग सिस्टम होगा, सो ये आपके टेस्ट के मार्क्स में मैं कंसिडर करूँगा. ओके, सो हाफ एन आवर का टेस्ट रहेगा, एंड उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे. ओके, ऑल आर मल्टी MCQ टाइप, so be ready for that. So today we will going to see. So first of all एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं सिटी का. ओके, so this is your this all cities and PTs comes under this instrument transformer. Okay, which is mainly using for the measurement purpose, and whatever the reading the this instrument get will send this information to other protective devices just like relay and circuit breaker, which is do their performance based on this reading. Okay, so these are the one example. CTs are connected in series, and PTs are connected in parallel. Okay, so these are the basic circuit for your current transformer, for your potential transformer. The secondary of CTs is set to the 5 ampere. Okay, and the primary current is depending on your load condition. So primary is flowing from this main circuit, and this is a transformer. Okay, current transformer. The secondary winding is has a more turns. More turns, it means it has a more potential. It is a step down, a step up transformer. Okay, so secondary current is restricted to 5 ampere. Okay, so here generally N2 is greater than of NS is greater than of NP. And in potential transformer, this is a act as a step down transformer in which NP is greater than of NS. Okay, so here this voltage, secondary voltage is less, and it is said to be 110 volt. So and this Vs is in general 110 volt, and here the secondary current Is is nothing but your 5 ampere. Okay, so these are the rated uh, uh,
rating for your current transformer and potential transformer. Now, there are some disadvantages given here. So if there any error is occurred, you can also reduce that error by making such arrangement. So first of all, this by using this shunt, you can also reduce the error. So see here, what is disadvantage for this shunt. It is a difficult to achieve the accuracy with the shunt on AC, since the division of current between the meter and the shunt depend on the reactance and resistance of two paths. The proper measurement of constant meter and the shunt should be same. So you can reduce the error, but one thing is that you need to maintain this time constant out between time constant of these two line. Okay, whatever you are going to shunt, आप किसी को भी शंट करने जाओगे, फॉर एग्जांपल ये आपका मीटर है, ठीक है, ये मीटर है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे शंट कुछ लगा दिया यहाँ पे, any type of handling. So time constant of these two coils, you must be set equal. So what are the time constant for this? This is nothing but your RL. So L by R. Same with this is your RL. So it is also L by R. So this is R1, L1, and this is L2, R2. So depending on that, if you that is difficult to achieve. Okay, so there is a certain condition, uh, you can reduce that error, but it is difficult to maintain this condition. So that is a comes under the disadvantages for this shunt winding. So how to use that? Therefore, a separate shunt would be needed for each instrument. So for that, we need you can't use this in overall instrument. आपको each इसमें separate shunt provide करना पड़ेगा for each instrument. So for that, the costing will increases and the number of the shuntage increases. The structure become more complicated. So ये आप advantage disadvantage पढ़ लेना, ठीक है. Now, so what are the advantage में भी एक बार देख लोगे तो when the instrument is used to this yes, the junction with the instrument transformer, their reading do not depend on their RLC parameter, right? Because these are the measure use this instrument transformer we are using for the measurement purpose. Okay, so it does not depend on this RLC component of your line. In case of the shunt and multiplier, the instrument transformer produce practically with the same instrument reading, regardless the constant of the instrument. In fact, the number of instrument connected in the circuit. Okay, and these are the rating वगैरह दिया है यहाँ पे CTs की. Okay, which are generally kept as a 5 ampere used in secondary, and PT में the PT has in the range of 100 volt to 120 volt, but typically we are using 1110 volt. Now these are the ratio which I already discussed. Transformer ratio. इसमें transformer ratio, it is nothing but your actual ratio, okay, in phasor terms. So primary phasor divided by secondary phasor. For CT, primary current upon secondary current. For PT, primary voltage, sorry, primary voltage upon secondary voltages. And the nominal voltage is nothing but your mm, uh, the primary rated current upon secondary rated current, the same ratio, but in terms of rated value. Okay, it called as a this nominal ratio. Same for the your turns ratio में क्या होता है, number of secondary turns upon number of primary turns. This turns ratio is always greater than 1, right? Greater than or equal to, you can say that, uh, always greater than 1. Okay, not equal to, always greater than 1. N is always greater than 1. Why? Because see, here the number of secondary winding and this number of primary winding. For CT, secondary winding
has a more number of turn because it is a step work as a step down transformer. Okay, it's a structure like step up transformer. So secondary turns is obviously more compared to primary turns. So this ratio become greater than 1. Similarly, for the potential transformer, it work as a step down transformer. So in that, secondary turns is less. So but in for this turns ratio, secondary is goes in denominator. So that's why n is greater than 1 for PT as well. So how to find out this ratio correction factor? This ratio for correction factor is nothing but you can say that the ratio of transformer ratio upon nominal ratio, or you can also written as this transformer ratio is equal to ratio correction factor into this nominal ratio. Okay, so these are the terms which is helpful for finding the these values uh, for the analysis of this performance of your cities and PTs. And what do you mean by burden? Burden is nothing but the load observed on the secondary side. Simple. Burden is nothing but a load observed on your secondary side, right? Of your इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर. सो इन केस ऑफ अगर मैं करंट सिटी की बात करूँ, सो उसमें हम करंट मेज़र करते हैं, राइट? बट करंट मेज़र करते हैं एंड एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट इज़ 5 एम्पियर. Okay, so depending on that, you can find out the burden, but for that you need to what the equivalent resistance. Sorry, the resistance observed on secondary you need to know for finding this burden. And if you're talking about the voltages, okay, so this formula in terms of voltage is nothing but your V square by R. Okay, R is nothing but your impedance of the secondary circuit, including the impedance of the secondary winding. So these are the total impedances. But when I talking about the losses, so this impedance is replaced with the R value. Okay, resistance. Now, these are the loading for your secondary side of any instrument transformer. Now these are the current transformer. Okay, so see, we already discussed this all these things. करंट ट्रांसफॉर्मर हमने पहले भी देखा था. ठीक है. सो यहाँ पे सिंपल वही सर्किट है, आपका सप्लाई यहाँ पे आया, लोड यहाँ पे कनेक्ट हुआ, यहाँ पे आपने करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया. फॉर दैट यू आर मेजरिंग द करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस सर्किट. You are all also interested to measure the power. So that's why this wattmeter you are connected with this. Okay, so for this wattmeter, you are able to finding the power consumed by the secondary. So what you do here, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? पावर कंज्यूम मीन्स जितना पावर इसमें फ्लो हो रहा है, मीन्स यू आर फाइंडिंग द दिस बर्डन ऑन योर सेकेंडरी साइड. सो बाय विच you can find out the equivalent, or you can say impedance for your secondary side. So with the help of this you can also find out, because you are doing such a arrangement by which you can measure the power on your secondary side. So this wattmeter कैसे वर्क करता है हम ये नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे. ओके, सो अभी के लिए आप ये देख लो कि वाटमीटर में दो कॉइल होती है, एक करंट कॉइल एंड एक प्रेशर कॉइल, और यू कैन से पोटेंशियल कॉइल ऑल्सो. सो सो बाय विच करंट कॉइल से आप करंट निकालते हो, पोटेंशियल कॉइल से आप दिस पोटेंशियल मेजर करते हो, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज नथिंग बट योर पावर ऑफ पावर कंज्यूम बाय दैट सर्किट. ओके, so by such arrangement you can able to find out the power. Now use of cities, uh, use of city for the current and power measurement. So these are the terms is given here, and some formula derivation is uh, solved. Derivation will be taken doing here. So ये जैसा आप देख रहे हो, this is a equivalent circuit of transformer. You already study in your machine 1. ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये आपका मेन फ्लक्स हो गया. ओके, सो दिस इज अ मैग्नेटाइजिंग करंट विच इज इन फेज विथ योर दिस मेन फ्लक्स, एंड दिस इज and this IE in phase of this ER. Okay,
ER की इसमें रहेगा ये आई इन फेज ऑफ दिस ER। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आई ई हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, दोनों का वेक्टर सम नथिंग बट योर दिस आई नॉट करंट, नो लोड करंट, नो लोड करंट यहाँ पे हो गया। नाउ सी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी करते हैं, राइट। सो यहाँ पे रहता है वो इक्विवेलेंट, फर्स्ट साइड में देखोगे तो सेकेंडरी प्राइमरी करंट क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ दिस, इस में बात करूँगा तो ये आपका आई नॉट प्लस आई, यू कैन से आई एस टू डैश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये नथिंग बट इसको कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट प्लस एन आई एस वन, इस टाइप में लिख सकते हो। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, इसको, ये नंबर ऑफ टर्म्स के है, टर्न्स के है, इसका मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो जाएगा, बट इसका फेज जो है वो आपके सेकेंडरी के अपोजिट ही रहेगा। ओके, दैट्स वाई ये इसके अपोज में ले लिया। यहाँ पे हमने इंडक्टिव सर्किट कंसिडर किया है, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर वोल्टेजेस। ओके, तो सम एंगल से यहाँ पे लैग किया, सो यहाँ पे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ओके, बट फेज में वैसे ही हो जाएगा, 180 डिग्री शिफ्ट हो गया ये। सो दोनों का वेक्टर सम इज नथिंग बट योर आई पी, इट इज प्राइमरी करंट, करंट हो गया। ओके, सो फॉर दैट एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस secondary current which is reflected to primary side and this primary current is angled by theta, so this is nothing but your error angle theta। so अगर ये error angle अगर in line with this TPO, so ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जब आपका ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इसके साथ हो, VS के साथ हो, इट मीन्स आपका टोटल लोड क्या हो, ये जो सेकेंडरी साइड का प्योरली रजिस्टिव हो। ओके, सो ऐसा पॉसिबल है, मे बी हो भी सकता है, बट समहाउ सम कुछ ना कुछ इंडक्टिव रहता ही है वहाँ पे। ओके, तो सम स्मॉल एंगल, सो आवर एम टू रिड्यूस दिस एंगल। ओके, और यू कैन से जितना मिनिमम हो उतना ज़्यादा बेटर है। नाउ, क्योंकि देखो अगर ये ऐसा रहेगा ना, तो योर प्राइमरी करंट इज इन फेज ऑफ योर सेकेंडरी करंट, तो जो भी रिलेशन आएगा, आप सेकेंडरी करंट आपको पता है, राइट, तो आपको वहाँ पे समहाउ लीनियर रिलेशन, यू कैन से बोल सकते हो कि लीनियर रिलेशन टाइप वो वर्क करेगा, मीन्स आपका उसमें जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी होगी। सो दीज आर ऑल द डेरिवेशंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, कर लो इसको अगर डेरिवेशन करना है तो। ओके, हम इसका कंक्लूजन जो भी फाइनल आता है उस पे न्यूमेरिकल देख लेंगे। ओके, सो सिंपल, ये हमें इतने से डील करना था, तो इतना पार्ट इसने यहाँ पे लिया है, एंड सिंपली ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करके दिस आर सेट द रिलेशन अमॉन्ग दिस थ्री क्वांटिटीज। सो यहाँ पे जो रेशो है, ट्रांसफॉर्मर रेशो ऑफ योर सेकंड फॉर योर सिटी, ट्रांसफॉर्मर रेशो इज नथिंग बट योर प्राइमरी करंट, सॉरी, क्या है ट्रांसफॉर्मर रेशियो यहाँ पे, सेकेंडरी करंट, प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, राइट। तो सेम वे प्राइमरी करंट अपॉन से सेकेंडरी करंट इन्होंने लिया है यहाँ पे रेशो। सो एंड रिप्लेस दैट वैल्यू विद दिस डेरिवेशन, सो यू विल गेट this is your actual value for this transform R। Okay, if you use the approximation, so generally हम क्या रखते हैं कि I naught is a very very less than of this n IS, so IS is usual, I naught is usually 1% of IP, uh, and this IP is very nearly equal to NIS. So very nearly equal to NIS. So you can replace these terms. So you will get this N I naught by S. And in further, you can also see this del, this del. If you okay, so see here. Huh. So there is more approximation they can consider based on your actual data, which is already available in your market. Okay, so they are consider they generally set this R value. Okay, R value in terms of this. N is nothing but your turns ratio. I am sine del plus IE cos of del by IS. Okay, in terms of your magnetizing, and this is your loss component. And okay, in terms of this,
Now, if you talking about this phase error angle, which is nothing but your थीटा, तो थीटा को भी आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ओके, ये हमने देख चुके थे हम। एंड एरर की बात करें तो यू कैन see this approximation formula for errors. So usually the burden is largely resistive with the sum inductance of, therefore del is a positive in general cases. So del की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो। So अगर del ज़ीरो है, then cos of del is nothing but your one. So this r is become your n by is by ie. Okay, sorry, IE by IS. This uh, R is nothing but your N plus I E by IS. Okay, इस टाइप में होगा। Now, so in degree format, you can also rewrite this. Theta is nothing but your 180 by Im by pi IP. Okay, so this approximation we are generally using in our calculation, and these are the characteristics of your cities. So you can just go through that. See the ratio अगर error increase करते हैं, these are the dependent quantity, these are the independent. Okay, if the secondary current is increases, then will be uh, uh, ratio R will be lower, right? देखो flat होते जा रहा है ये। At the starting, if secondary current is small, then this ratio is comparatively comparably more. Okay, so okay, now same for this theta del. So del का variation by which you can observe the this ratio kn by n. So these are the characteristics of your cities. ओके, सो यहाँ पे और भी टर्म दिए हुए हैं। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ उसके बारे में ही दिया है। यू कैन रीड इट आउट। ओके, एंड रिडक्शन इन एरर। सो दिस इज हाउ टू रिड्यूस द एरर इन योर दिस सिटीज। सो डिपेंड फर्स्ट इज, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए यू आर यूजिंग द different types of material, right? So same way, silicon steel material are using. So there are there are given some example. So first of all, how to reduce. So first aspect is design feature in which the core. So depending on different types of material available, so each material has their own property. So you just minimize the error for example magnetizing current ion and the loss component ion must kept at a low value. Okay, so if you kept this at a low value, then uh, your this magnetizing and hysteresis loss will be low. ओके, कि आपने वो उनका हिस्टेरिसिस लूप आपने देखा होगा, उसमें रहता है एक मैग्नेटाइजिंग करंट, एक दिस कोर करंट, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेंसिटी बी एच कर्व देखा होगा उसमें। ओके, सो इन दैट आपका जो शेप है, ओके, आइडियल शेप कैसा होता है? आइडियल तो ऐसा होता है, राइट? बट प्रैक्टिकल में कैसा होना चाहिए? जितना लो ऐसा जाता है आई थिंक, फिर ऐसा होता है, राइट? सो ये जितना स्लिम रहे उतना ज़्यादा बेटर है। सो फॉर दैट यू नीड टू, ऐसा होता है। So for that you need to use different types of material. Each material has their own property. So regarding this you can achieve the slim curve. For this is nothing but your vs type of uh, this condition. So इससे रिलेटेड है। सो ये वन ऑफ द वे है कि आपको रिड्यूस करें। ओके,
So see, there are also used for 4% of silicon for this material. Hot rolled silicon steel, second cold rolled grain-oriented silicon steel, and nickel alloy. So silicon steel is used for your uh, reducing your history, this eddy current losses uh, and hysteresis losses. Okay, so they here we are using these two types of structure. Sorry, this circular structure. Okay, ring types core and this spiral type core. So ये सब दिया है इसमें डेटा, एक बार पढ़ लो इसको. ये तो देखा था ना हमने. ओके, एंड द सेकंड वन इज प्राइमरी करंट रेटिंग. सो डिजायरेबल दैट क्या है डिजायरेबल फॉर सीटी, द सीटी रेशियो, that the ratio of exciting current to the primary current should be small, and this means that the ratio of excitation mmf to the primary mmf should be low, but it is difficult to achieve. Why? Because primary साइड का करंट तो आपका ट्रांसमिशन इस पे डिपेंड करता है ना, कितने अमाउंट का आप करंट ट्रांसफर कर रहे हो. So you just measure that current, right? So now primary current and mmf is small as improvement the performance always obtained by the increasing the primary mmf. The satisfactory result usually achieved if the total primary mmf is current is 500. सो दिस टाइप्स ऑफ एरर फॉर सिटी को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है फॉर दैट यू आर मेजरिंग जनरली सच अमाउंट सच हैवी अमाउंट ऑफ करंट. सो उस केस में you can't lose your accuracy, but when you go below that amount of current, so there are and so there are some error you can also find out related to this. Okay, related to this emf. Now the leakage reactant is also an important factor deciding the accuracy. Okay, so leakage reactant should be low as much possible. Now the compensation, this turns compensation, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने देखा था. आइन इज इक्वल टू आई एस बाय आई ई बाय आई एस. ओके, दिस इज अ नॉमिनल रेशो. अब इसमें क्या बोलता है ये, एक जैसे आपके पास कुछ है, वाइंडिंग है, सॉरी सीटी है, तो सीटी में इफ़ यू डू वेट, हाँ, if what is in, okay, what happened in that, if जनरल ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इसमें जो आपका ये नॉमिनल रेशियो है. ओके, नॉमिनल रेशियो विच इज़ नथिंग बट योर, आई जस्ट रिप्रेजेंट दैट नॉमिनल रेशियो इन टर्म्स ऑफ के एन. अगर के एन को आप टर्न्स रेशियो के फॉर्मेट में रखो, ओके, टर्न्स रेशियो के फॉर्मेट में रखो, देन योर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज लेस देन ऑफ योर के एन डैश. सो आपका जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, you just observe that is nothing but your less than of your nominal ratio. ओके, ये एक कंडीशन है. एंड इसका सेकंड कंडीशन यू कैन से दैट, ये फर्स्ट हो गया. ओके, अब सेकंड सिचुएशन कैसे आएंगी, अगर आप इसमें जिसका टर्न्स रेशो को डिक्रीज करो बाय कीपिंग दिस के एन डैश, जो आपका के एन है, जो सेकंड के एन है, विच इज़ सेट करो इसको प्रीवियस वन से, मतलब जो आपका पहले का दिस एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर दिस नॉमिनल रेशियो था उसके बराबर ही रखो. रेस्ट ऑल दिस थिंग सेम. ओके, ओनली थिंग इज दैट यू जस्ट डिक्रीज द दिस टर्न्स रेशियो. सो इस केस में आपको क्या ऑब्जर्व होगा, जो आपका ये है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर, जो आपका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके, वो डिक्रीज हो जाएगा. सो इट इज़ अ डिज़ायरेबल, राइट. सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला, अगर देखो ये आप एन डिक्रीज करते हो. ओके, सो ये टर्म तो आपका कांस्टेंट ही रह जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी करंट आपका कांस्टेंट है.
and this IE is nothing but your loss component, which is a given generally in your question, right? See here, this is a loss component, which is nothing but your 0.6% of your primary current, which is nothing but your 6 ampere here. So this term is become constant only this R is related to this N. So अगर आप N को डिक्रीज करते हो तो आपका R भी डिक्रीज हो जाता है, ओके. नाउ सी, इन फर्स्ट केस में क्या था, आप N को इक्वल रखते हो आपके नॉमिनल रेशो से. उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका क्या होता है, ये जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, इसका टर्न्स रेशो, नॉमिनल रेशो एंड दिस एक्चुअल रेशो, ओके. सो उससे रिलेट करोगे आप, जैसे एन इज इक्वल टू सेकेंडरी अपन प्राइमरी, एंड दिस एक्चुअल रेशो, नॉमिनल रेशो इज नथिंग बट योर प्राइमरी रेटेड करंट अपॉन सेकेंडरी रेटेड करंट. आर इज नथिंग बट योर प्राइमरी एक्चुअल करंट अपॉन सेकेंडरी एक्चुअल करंट. सो व्हेन यू ऑब्जर्व दैट, सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिया है इसने, सेम किया है इसने. क्या दिया है, ये आपको रेशो दिया है, इससे आप के एन निकाल लोगे, ठीक है. एक्चुअल अपॉन ये प्राइमरी रेटेड अपॉन सेकेंडरी रेटेड, विच इज़ नथिंग बट योर 200, एंड लॉस कंपोनेंट यहाँ पे दिया है जो कि प्राइमरी करंट से निकलते हैं, ओके. सो दिस इज नथिंग बट 6 एम्पियर. एंड एन पी क्या यहाँ पे कंसिडर करना है, प्राइमरी टर्न हम हमेशा लेस रखते हैं, तो यहाँ पे बार अगर मैं कंसिडर करूँ, बार primary, so NP is nothing but your 1, and the secondary term which is not given. So according to our first condition, this is nothing but your turns ratio is nothing but your 200 here. ओके, 200 कैसे आएगा, तो दिस टर्न्स रेशियो इज इक्वल टू योर दिस नॉमिनल रेशियो कितना है 200, तो एन इज नथिंग बट 200, सो एन पी सेकेंडरी टर्न्स कितना है 200 आ गया. सो ऑब्जर्व करो, ये पुट दिस वैल्यू टू दिस इक्वेशन, सो यू विल गेट आर इज 201.2, ओके, 201.2. But when you put this value, decrease that turns, number of turns, you will get बाय वन, राइट. पहले आपने 200 टन्स लिया था, अब सेकंड कंडीशन में 199 टन्स लिया, सो इसमें आपको कितना मिला, 202.2. सो यू डिक्रीज दैट वैल्यू बाय वन. सो इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज द सेकेंडरी टर्न्स बाय डिक्रीजिंग द 1 or 2 टर्न्स of your rated nominal ratio. Now see, already यहाँ पे mention होगा. Usually, the best number of secondary turns is 1 or 2 less than the which would you make the actual transform ratio equal to the nominal transform ratio. इसको इक्वल करने के लिए जो टर्न्स रखता है आपको उससे 1 or 2 टर्न्स लेस रखना है. सो your value should be accurate, okay. The phase angle error is very little affected by the change of 1 or 2 turns in the secondary. So by this the ratio error will be uh, uh, compensate, right. Now, and the second is Wilson compensation method. Okay, so Wilson compensation method is this method is generally used for compensating the phase angle error. ओके, सो फेज एंगल एरर के लिए यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे ये यहाँ पे होल करते हैं, ओके, होल करके उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को. शॉर्ट सर्किट करने की वजह से सो एक्चुअल में जो आपका ईएमएफ है, ईएमएफ का जो यहाँ पे इसका इफेक्ट है वो नलीफाई करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये वाइंडिंग है, यहाँ से करंट जा रहा है, सो यू जस्ट शॉर्ट सर्किट दिस वाइंडिंग टू दिस 2 पॉइंट, ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा, and the same winding you can use in such a way that which is nullify the effect of this फील्ड का जो इफेक्ट है वो नलीफाई कर देता है. जैसे आपने मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में पढ़ा है, राइट. ये आपने यहाँ पे टैपिंग दे दिया, फिर यहाँ पे अगर इसमें अगर मैं यहाँ पे सेकेंड टैपिंग यहाँ पे दे दिया बट करंट यहाँ पे फ्लो कर गया, तो इसका इफेक्ट नलीफाई होगा ना. म्यूचुअल इंडक्ट इज नॉट एडिटिव, इट इज अ सब्ट्रैक्टिव. So same way, same concept is using here. Okay, so इससे मैं और इलेबरेट करता हूँ. ओके, सो ये एग्जांपल है, इसको सॉल्व करके देखो आप बेटा.
जल्दी से इसको सॉल्व करो। एक एग्जांपल, a current transformer has a single turns of primary and 200 turns of the secondary. Okay, 200 turns of the secondary. Then the secondary winding supply the current of 5 ampere to a non-inductive burden of 1 ohm resistance. So non-inductive burden है तो secondary में inductive है नहीं। Okay, so secondary में non-inductive burden है, it means क्या होगा, जो IS है, IS जो इन फेज ऑफ यूर ES हो जाएगा, राइट, बिकॉज बर्डन तो है ही नहीं, नॉन इंडक्टिव है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व कैसा बनेगा। हम पहले क्या बनाते थे, दिस इज योर मेन फ्लक्स फायर, राइट। सो यहाँ पे हमारा ES रहता था, ES रहता था। ओके, विच इज द सम ऑफ योर ES एंड VS, सॉरी VS एंड आपका जो भी इंडक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट होते थे उनका वेक्टर सम रहता था। बट यहाँ पे हमारा नॉन इंडक्टिव है, सो यहाँ पे मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, दिस इज IS इन फेज ऑफ दिस ES, राइट। एंड इसका जो ये है रिफ्लेक्टेड टर्म वो कहाँ पे आएगा, ऊपर में आएगा, विच इज़ नथिंग बट योर NIS, राइट। एंड हेयर और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, the requisite plug is set in a core by the MMF is 80 ampere. The frequency is 50 hertz and the net cross section of core is 1000 mm square. Now, so यहाँ पे अगर मेन फ्लक्स ये है, so यहाँ पे आपका IM तो यहीं पे रहेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, IM, so यहाँ पे कुछ आपका IE होगा, then the vector sum of this is nothing but here IP, right, primary current. So this angle, the difference of these two angles is nothing but your uh, error angle, right? The angle nothing but your theta, this angle is nothing but your theta. Now if we neglect the magnetizing leakage reactance on the secondary, leakage reactance becomes zero। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो निगलेक्ट करना है। इफ यू निगलेक्ट, अब सॉल्व करो इसको। इफ यू निगलेक्ट द मैग्नेटाइजिंग लीकेज, magnetic leakage, then secondary leakage reactance becomes zero. Therefore, the secondary burden on purely resistive, okay, and the impedance and the impedance of the burden is equal to the resistance of the secondary winding. So burden is nothing but your equal to the resistance of the secondary winding. Okay, so which is already mentioned in your question, secondary burden हमारा क्या हो जाएगा, नॉन इंडक्टिव है तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। सो व्हाट आर द डेटा इज गिवन टू यू, ZS दिया हुआ है, ये आपका नथिंग बट ये ZS। ES क्या है यहाँ पे आपका, ES, ES कैसे निकालोगे आप, सेकेंडरी वाइंडिंग हैज़ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, सो 5 एम्पियर है, ZS आपको दिया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका ES निकल जाएगा। ES इज नथिंग बट योर 5 एम्पियर इंटू 1 विच इज नथिंग बट योर 5 वोल्ट। ओके, एंड डेल नॉट आपको यहाँ पे ज़ीरो कंसिडर करना है। क्यों ज़ीरो करना है, क्योंकि बोथ आर इन फेस, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, बोथ आर सेकेंडरी साइड का रहता है वो, तो IS एंड ES आर इन फेस, सो डेल नॉट इज ज़ीरो है। ओके, सो लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट इज टू बी निगलेक्टेड। सो यहाँ पे जो लॉस कंपोनेंट है वो भी आपको निगलेक्ट करना है। डेल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, loss component of E naught is also nearly equal to zero, so you can say very less। so हम यहाँ पे ओके, ये नियरली इक्वल टू ज़ीरो है, वो ग्राफ में मैंने आपको ऐसे शो किया, बट
it is nearly equal to 0. So if you see, what is I naught is nothing but your vector sum of these two component, which is I m naught by I e naught. So यहाँ पे हम कैसे इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, सो विच इज़ नथिंग बट योर आई एम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. ओके, व्हाट इज दैट? सेटअप फ्लक्स. ओके, प्रीरिक्विजिट ऑफ द दिस फ्लक्स सेटअप इन योर कोड. कौन सेटअप फ्लक्स करता है? आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, विच इज नथिंग बट योर 80 एम्पियर. सो आई एम आपको दिया है, सो आई एम इज नथिंग बट योर आई नॉट. Okay, and the secondary current, so I naught is nothing but your 80 ampere. And what are the current in primary side is 1 turn, so that's why we divided it 1. So total 80 ampere is flowing in that primary side. uh, okay, now IS भी पता है आपको. IS तो सेकेंडरी साइड का 5 एम्पियर ही रखना है. सो एंड आई टू डैश क्या होता है? सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड, विच इज नथिंग बट एन इंटू आई एस. सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे यहाँ पे? 200 मल्टीप्लाई बाय 5, विच इज नथिंग बट योर 1000 एम्पियर. सिमिलरली आई पी कितना है यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ दिस प्राइमरी करंट क्या हो जाएगा? वेक्टर सम ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड करंट इंटू आई नॉट. सो आई नॉट कितना है? I naught is nothing but your 80 ampere, right? And this I2 dash is 1000 ampere. So square of these two terms, 80 square, 80 square plus 1000 square, which is, when you solve this, you will get 1003.2 ampere. Solve करते जाओ guys. Okay, and the same. What is the value of R? R is nothing but your ratio of primary current upon secondary current. R is nothing but your actual ratio. Okay, or you can say transformer ratio. कितना आया इसमें प्राइमरी करंट आपका? 1003.2, एंड सेकेंडरी इज 5 minutes. So if you divide these two quantity, what you will get is nothing but your 200.64. And what how to calculate the angle theta? Theta is nothing but your tan inverse of, see here, how to calculate this value theta. See, this is nothing but your this value is Im. So see, this is nothing but your Im, right? And this value, okay. Actually guys, this is IP हम कैसे निकालते थे? प्राइमरी करंट है, ये तो आई नॉट था. सो आईपी के लिए यू नीड टू add these things. Okay, ip is nothing but the vector sum of your nis by this. So this is your is, right? So this is your im, and this is your nis, right? So if, and this value, this angle is theta. How to calculate this theta? Now this is a, see, this is your hypotenuse, and tan inverse theta is opposite upon adjacent. So I am by this term, what is that? Is nothing but a nis. Okay, so this theta is nothing but your tan inverse of I am by nis. Put करो value in terms of degree and minute, you will get 4 degree 34 minute. Okay, then same way, you can easily find out this es when you use this formula of transformer 4.44 5ft, right? So for secondary side, uh, this we use this. So how to find out this 5m? es आपको पता है, right? es कितना था इसमें? es divided by 4.44 5 ns. Okay, so ये all quantity you know, right? When you put the value and solve this, you will get some answer here, which is nothing but here 1126 into 10 to the power of minus 3 Weber.
ओके, ईएस पता है आपको, फ्रीक्वेंसी भी आपको जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है इंडिया की, वो कंसिडर करो, या तो फिर क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, ओके, यूज दैट फ्रीक्वेंसी। एंड एन एस सेकेंडरी टर्न्स भी आपने कैलकुलेट किया है, 5 निकला है, तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फ्लक्स एंड दिस फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, राइट? सो ओके, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, राइट? सो इसमें आप बी कैसे निकालोगे, 5/a हो जाएगा। सो बी इज नथिंग बट योर 5/a। So if you take this 5 mbm, then this is your 5m, 5m आपने निकाला हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है, then you can easily find out this, which is nothing but your 0.1126 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो इस टाइप के जो फॉर्मूलेज है, दैट विल बी आस्क इन योर एग्जाम। ओके, सो जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है एंड अनसॉल्व एग्जाम्पल जो भी बुक में दिए हुए हैं सी टी एन पी टी के, उसको एक बार देख लो, या फिर बुक के नहीं भी देखना है तो जितना मैं मेरे स्लाइड्स के ना फॉर कल के टेस्ट के लिए जितना मैंने स्लाइड्स में लिया है ना जितने एग्जांपल, उस टाइप के देख लो, ठीक है? उस टाइप के क्वेश्चन मैं सेट करूँगा मेरे स्लाइड्स में, जितने भी अभी तक मैंने स्लाइड्स आपको शेयर किया हूँ, उसमें मैं जिस टाइप के क्वेश्चन लिया हूँ, जिस टाइप का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है फॉर द सॉल्यूशन of their problem, right? So I will ask the same types of question, so वो देख लो, फिर आप एमएसटी में जितने भी आपके बुक्स में जो सॉल्व एग्जांपल है वो प्लस अनसॉल्व एग्जांपल भी थोड़ा देख लेना, उस टाइपिंग की क्वेश्चन आपको आएंगे। ओके, ये एग्जांपल हम अभी अपकमिंग लेक्चर में देखते हैं, और ठीक है, ओके गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट अभी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो एग्जांपल।